डेलीगेट होता क्या है? सुना है खाली सर, पता थोड़ी ही का होता सब, फिर रोज लोग बोलता है डेलीगेट। डेलीगेट अब आज भी एक्चुअली पता। रेफरेंस टाइप के वेरिएबल है जो मैचिंग मेथड के एड्रेस को स्टोर करता है. डेलीगेट इज ए रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ मैचिंग मेथड्स. ठीक है. डेलीगेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डेलीगेट कीवर्ड. मैं अभी आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा. ये देखिए यहाँ पे नोट्स है, आप लोग को शेयर हो गया होगा. डेलीगेट इज़ वन ऑफ द बेस्ड डेटा टाइप इन डॉट नेट. इसको आप डेटा टाइप भी कर सकते हो. डेलीगेट इज़ अ क्लास विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड इन्वोक डेलीगेट्स एट द रन टाइम. A delegate in C Sharp is similar to a function pointer in C++. अगर आपने पॉइंटर का नाम सुना होगा C++ में, तो बिल्कुल पॉइंटर की तरह ही डेलीगेट काम करता है C Sharp में, है ना. इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन C Sharp. एक नए तरीके का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट के लिए. इट इज़ यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ फंक्शन और मैथड्स. ये लाइन आपको याद कर लेना है कि डेलीगेट इज़ अ डेटा टाइप इन डॉट नेट विच इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ फंक्शन और मेथड्स. यानी मान के चलो अगर सी शार्प पढ़ रहे हो तो फंक्शन को मेथड्स ही बोलते हैं यहाँ पे. वाई वी नीड डेलीगेट्स इन सी शार्प. अब भी हम लोग को डेलीगेट्स क्यों ज़रूरी है? प्रोग्रामर्स ऑफन नीड टू पास ए मेथड एज ए पैरामीटर ऑफ अदर मेथड्स. फॉर द पर्पस वी क्रिएट एंड यूज डेलीगेट्स. इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि पूरे फंक्शन को ही एज ए पैरामीटर पास करना होता है. जब किसी फंक्शंस को आप एज ए पैरामीटर पास कर रहे हो, जो कि इसके पहले आप वैल्यू में पास करते थे, तो वो काम आप डेलीगेट से ही कर सकते हो. ए डेलीगेट इज ए क्लास दैट इनकैप्सुलेट्स ए मेथड सिग्नेचर. नॉट डेलीगेट यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ मैचिंग मेथड्स. डेलीगेट अगर किसी भी मेथड्स का एड्रेस स्टोर करता है तो वो किस टाइप का एड्रेस होगा? मैचिंग मेथड्स. ठीक है. मैचिंग मेथड्स मीन्स सिग्नेचर ऑफ डेलीगेट्स दैट शुड बी सेम विद द सिग्नेचर ऑफ मेथड्स. इसका मतलब ये है कि जो मेथड का सिग्नेचर है वो डेलीगेट के सिग्नेचर से मैचिंग होगा, तभी वो उस टाइप के मेथड्स के एड्रेस को डेलीगेट स्टोर करेगा. इसका मतलब ये है कि कोई ऐड नाम का मेथड है जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट है, इंट ए, इंट बी, इंट सी. अब ये तीनों आर्गुमेंटाइज मेथड्स की एड्रेस को आपको स्टोर करवाना है, तो उसके लिए जो आप डेलीगेट बनाओगे उसमें भी 3 ही आर्गुमेंट होगा. बेशक नाम अलग हो, लेकिन सीक्वेंस ऑफ टाइप, डेटा टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट शुड बी इन ए सेम ऑर्डर. जैसा कि हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था पिछले सेशन में, तो मेथड ओवरलोडिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वी कैन ओवरलोड सेवरल मेथड्स हैविंग सेम नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, है ना. सेम नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर्स कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ टाइप, डेटा टाइप दैट शुड बी डिफरेंट, है ना. तो जब भी आप डेलीगेट की बात करते हो तो ऐसे डेलीगेट किस टाइप के मेथड्स के रेफरेंस को स्टोर करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 2 आर्गुमेंट्स है किसी भी मेथड्स का, तो 2 आर्गुमेंट्स के मेथड्स का एड्रेस जो है डेलीगेट आपको स्टोर करेगा, तो उसके अंदर भी 2 आर्गुमेंट्स का ही डेलीगेट बनना चाहिए. अगर कोई 3 आर्गुमेंट्स का है मेथड, तो डेलीगेट भी आपका 3 आर्गुमेंट्स का ही बनेगा. कितने टाइप के डेलीगेट होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन? सिंगल कास्ट डेलीगेट एंड मल्टी कास्ट डेलीगेट. सिंगल कास्ट डेलीगेट क्या कहता है? इट इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ सिंगल मेथड. ठीक है. और मल्टी कास्ट डेलीगेट क्या कहता है? इट इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ मल्टीपल मेथड्स. कहने का मतलब ये कि अगर आपको एक मेथड का एड्रेस स्टोर करना है तो उस टेक्निक को सिंगल कास्ट डेलीगेट कहा जाएगा, और एक से अधिक करना हो तो मल्टी कास्ट डेलीगेट. मैं बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट के अंदर जो डेलीगेट्स हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर मल्टी कास्ट डेलीगेट ही चलता है, सिंगल कास्ट बहुत कम चलता है. लेकिन टॉपिक में है तो इसे भी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा. तो एक बार फिर से, डेलीगेट होता क्या है? डेलीगेट एक फंक्शन पॉइंटर है जिसका काम क्या है? मैचिंग मेथड्स के एड्रेस को स्टोर करना. ठीक है. अगर आप इतना कुछ नहीं बोल पाते हो
तो एक सिंपल लाइन बोलते हैं ना कि डेलीगेट इज अ फंक्शन पॉइंटर, है ना। और कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिंगल कास्ट, मल्टी कास्ट, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है? डेलीगेट कैन बी क्लास डिक्लेरेटिव। इसका मतलब ये है कि डेलीगेट जब भी डिक्लेयर होगा तो क्लास लेवल पे होगा, किसी मेथड लेवल पे नहीं होगा। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड मेथड, ठीक है। और एक लाइन और लिखा हुआ है, डेलीगेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डेलीगेट कीवर्ड, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुका हूँ। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है, इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड लगाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से अगर आपको डेलीगेट्स बनाना हो तो डेलीगेट्स बनाने के लिए डेलीगेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जिसमें अब मैंने आपको सिंगल कास्ट डेलीगेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से कोड कॉपी कर लिया है और ये रहा हमारा visualstudio.net, और यहाँ से मैं कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जिसमें आपको सिंगल कास्ट डेलीगेट को परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको मल्टी कास्ट डेलीगेट भी बताऊँगा। मल्टी कास्ट डेलीगेट, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम मल्टी कास्ट डेलीगेट बनाते हैं, इट मीन्स कि हम मल्टीपल मेथड्स की एड्रेस को स्टोर कर रहे होते हैं। अब चूँकि अभी फ़िलहाल हमें सिंगल कास्ट डेलीगेट बनाना है, इसका मतलब ये है कि हम किसी सिंगल मेथड की एड्रेस को ही स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, और क्रिएट करने के बाद थोड़ी देर में हमारा विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस बन के तैयार हो गया है। मैं यहाँ से अननेसेसरी नेम स्पेसेस को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं मेन मेथड्स को रखता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोग्राम को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेसेस छूटा हुआ है, एक ब्रेसेस लगा देना है, और इसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ पे एक मिस कर रहा है, वो लाइन को भी ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया हूँ। सबसे पहले क्लास, तो हम सभी को पता है क्लास एक ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर है, एक टेम्पलेट है, कंटेनर है। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बताया अभी लाइन में कि डेलीगेट जो होता है वो क्लास डिक्लेरेटिव होता है। क्लास डिक्लेरेटिव कहने का मतलब ये होता है कि डेलीगेट्स को हम जब भी क्रिएट करेंगे तो क्लास लेवल पे ही क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग मुझे सवाल का जवाब देना कि हमने जो डेलीगेट बनाया है इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स ही हमने क्यों लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस मेथड की एड्रेस हम उस डेलीगेट में रन टाइम में स्टोर करवाने वाले हैं, उस मेथड के अंदर भी जो आर्गुमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 2 ही है। आप जब भी शायद मेथड्स को आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ईच a प्लस बी, यानी जो इसके अंदर वैल्यू जाएगा वो प्लस होकर के दिख जाएगा। समझे नहीं समझे? लेकिन इसके अंदर वैल्यू कौन डालेगा? डेलीगेट। और डेलीगेट के अंदर वैल्यू कौन डालेगा? यूज़र। यूज़र डेलीगेट को डालेगा और डेलीगेट उस ऐड मेथड को डाल देगा, क्योंकि उस ऐड मेथड का रेफरेंस यानी एड्रेस डेलीगेट के पास है। अब मान के चलो अगर आपको बहुत सारे मेथड्स के अंदर सेम वैल्यू पास करना हो तो सारे मेथड्स को 1 बाय 1 कॉल करने के बजाय अब एक सिंगल डेलीगेट को कॉल कर लो, और एक डेलीगेट जो है इंटरनली सारे मेथड्स को कॉल कर लेगा। उससे आपका मेमोरी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और सिक्योरिटी भी अचीव होगा। So using delegate is very good practice in your programming language if you know. So again, what is delegate? So it is a function pointer that is used to store address of matching methods. Matching methods means you already know that the number of arguments, sequence of type and data type that should be same with the delegate signatures, right? Delegates only used to store the address of matching methods whose signature is same with the delegates. And there are 2 types of delegates in C#. One is single cast delegate and another is multi cast delegate. So single cast delegate that is used to store address of single methods, whereas multi cast delegate is used to store address of multiple methods. But in this examples I am showing how to store address of single method. So that's why I have created a methods name add having 2 integer arguments a and b. When you call this methods, this will perform addition of 2 numbers. For that we need to pass arguments to the delegates, not to the methods directly. But in earlier examples, how we treat like parameterized methods, if you call parameterized methods from the main methods, we always need to pass arguments to the direct methods. But in this essence we are not going to pass any arguments to the method directly. Rather than we are going to send value to the delegate first, and internally delegate will send that value to that particular methods
whose address are stored inside that delegate. Right, so let's see the step by step how this program's executing. So let's come to the main functions. Here is the main functions, and here I have created a program class or instance of that program class, and after that I have also created the instance of delegate. So the name of delegate is MyDel. This can be any name because this is an identifier. This is the user defined name. So user defined name, that can be any names except reserved keywords. So MyDel is not any reserved keyword. So we can create any name of delegates. But this delegate is a very predefined word. This is a reserved word. We cannot keep the delegate name in capital letters, void in capital letters, because C# have given you the rules and regulations. You have to follow that rules if you want to define delegates and anything inside C# programming language. So we again notice this delegates, that is a function pointers containing 2 integer arguments. Add is a methods also containing 2 integer arguments. So what will be happen here? This delegate MyDel will store the address of add methods. Let's see the examples. When I have created the delegate objects and I have passed the methods reference here, notice that I have not included here parentheses of that methods, because this time I am not executing the functions. I am passing the address of this add methods to the d1 object of delegates. Right, and after the line using d1 is what? d1 is an object of delegate. It means d1 is a delegate. Directly we cannot use the name of that delegate MyDel. So that's why we have created an object of that MyDel, and inside that object there is address of add methods, because add method is very matching methods with your delegates. If you declared 3 arguments inside the delegate and 2 arguments inside the add methods, this delegate is not capable to accept address of that methods. But this time the address, why the address of add method is storing inside the delegates? Because both have same signature. So when this line will be executed, what will be happen here? So we are passing 20 and 10. This is given value. You can also accept user inputs if you want. So I'm passing 20 and 10 to the delegate d1, and this d1 delegates internally passing, because this d1 having the reference of add methods. So when you pass 20 and 10 to the delegate d1, internally this value will goes to this method add a and b. The value of a and b will be 20 and 10, and when this line will be executed, the answer will be addition of 2 numbers is 20 plus 10, that is 30. So here is the result. We can see that's the result here. Yes, now it is okay. Yes, but if you want to take user inputs rather than giving some value, you can accept user input from here. I'm just prompting console.write line, enter 2 integer number. Right, let's take int n1 n2, and n1 equal to convert dot to in 32, console dot read line, int n2 equal to convert dot to in 32, console dot read line. Right, and here we need to pass n1 comma n2. Now the same will work, but what will happen here? We can give the user input from here. So I am giving 100 and 200. So in earlier examples the result was 30, but in this examples the result will be 300. So you can also accept user input to passing value to the delegates, and internally that delegate will pass the value to the methods. Why? Because this delegate is storing address of matching methods. Matching methods means the number of arguments with the number of arguments inside delegates and the number of arguments inside the methods both are the same number of arguments. That's why only. अब आप लोग बताइए कोई क्वेश्चन अगर है आप लोग को तो सजादन फिरदौस। नहीं सर, सब क्लियर हो गया? जी सर।
अब मैं मल्टीकास्ट डेलीगेट का एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो सिंगल कास्ट डेलीगेट हो गया, ठीक है। मल्टीकास्ट डेलीगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक से अधिक मेथड्स बनाने हैं, राइट। और डेलीगेट एक ही रहेगा, मेथड्स एक से अधिक रहेंगे, ठीक है। डेलीगेट एक ही रहेगा, मेथड्स एक से अधिक रहेंगे, और एक ही डेलीगेट वो सारे मेथड्स के रेफरेंस को स्टोर करेगा। लेट्स सी हाउ। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम में लेके चलता हूँ और आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाता हूँ यूजिंग मल्टीकास्ट डेलीगेट। लेट्स सी। सो एक बार फिर से सेम एग्जांपल, बस यहाँ पे मैं कंसोल रो रेड लाइन लगा देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, क्लास प्रोग्राम, ठीक है। लेट्स पुट द एग्जांपल ऑफ multicast delegate. So the same delegates here, mydel, having two integer argument a and b. I have created add methods having same arguments a and b. I have created again a methods that is sub, multiply and divide. So all methods have same signature, that is number of arguments that are 2 and integer type. And same with my delegates, it is also number of arguments that is 2 of integer type, ठीक है। And inside the main functions I have created object of program and also object of mydel. But notice that the first time I pass the address of add method here, and again in the second line I pass the address of subtract method, similarly multiply and divide. But why I have used plus sign here? Because this is arithmetic assignment operator, and what this arithmetic assignment operator do, basically if anything will be inside d1, that will be concatenated after the new value. That's the meaning of arithmetic assignment, because inside d1 there is already reference of add methods. Yes or no? When the compiler executes this line, what will happen, the address of add methods will send to the d1, that is an object of delegate. And again when compilers comes to this line, what will happen, the address of subtract methods will go to the d1 object, but just think about this, d1 have already the reference of add method. So what will happen if the next line will be executed, the address of add methods as well as address of subtract method both will store inside same d1 object. Why? Because I am using here plus operator, so plus operator will concatenate the address again and again, multiple times I am using plus equal to, it means कि all the address of add, subtract, multiply, divide are storing on the same place of d1 objects. So d1 having address of all methods. So similarly, just think about this, if you need to create thousands of methods that will perform different tasks but required only the same input, so what will do, just create a delegate, pass value to that delegate, and inside delegate we can pass address of all the methods. So what will happen, you can save your time, you can save your memory, and you can also reduce the code and achieve the security. Yes or no? So what will happen here, I am passing 20 and 10 to the delegate, and internally delegates have address of all these 4 methods. So 20 and 10 will goes to all the methods like add, subtract, multiply and divide, and accordingly this will print the information. Any addition of 2 numbers is this, multiplication, subtraction and division of 2 numbers is this. So when you run this program, there will be 4 outputs in 4 different lines. Yes, addition of 2 numbers, that is 30. Why? Because I have passed 20 and 10. So 20 and 10, 20 plus 10, that is 30, 20 minus 10, that is 10, and 20 into 10, that is 200, and 20 divided by 10, that is 2. Right? So if you want to take user input here, you can also take user input. So let's prompt console.writeline, enter 2 integer numbers. Here take n1 and n2, and inside n1 I am just passing user input here, console.writeline, and inside the different line let's call
convert.to in 32 console.read line. Fine. Let's pass n1 and n2 here. So when you execute this program, this will ask user input. So I am passing user input, that is 50 and 5. So what will be the output? When the first line will be executed, the add method will perform addition of two numbers, that is 50 plus 5, that is 55, and subtraction, that will be 50 minus 5, that is 45, and multiplication 50 into 5, that is 250, and division, that is 50 divided by 5, that is 10. So absolutely the correct answer is. So what in this example we are getting, that we are calling several methods having same name, having different name with same signatures. Why? Because the signature of all methods, that is matching with the delegate signature. That's why the single delegate is capable to accept multiple addresses of multiple methods. Yes या no? अब यहाँ पे आपको अगर कोई सवाल है तो पूछिए. ये आपको एडवांटेज यहाँ पे दिख जाता है कि सारे मेथड्स के रेफरेंस आप सेम ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पे स्टोर करा रहे हो और वैल्यू आपको सिर्फ एक जगह पास करना हो रहा है. अगर आप डेलीगेट नहीं बनाते थे तो सारे मेथड्स में अलग अलग वैल्यू पास करना होता था. यस या नो? अगर 4 मेथड्स हैं तो चारों मेथड्स में पास करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे चारों मेथड्स को हमने एक डेलीगेट के अंदर स्टोर करा दिया और स्टोर कराने के बाद मेथड के अंदर, डेलीगेट के अंदर जस्ट हमने एक बार वैल्यू पास किया है, ना कि 4 बार. ठीक है. अब यहाँ से कोई सवाल जवाब अगर आपको है तो क्रिएट करो. शहजाद फिरदौस. सर why we use delegate in project, sir? Yes, it is a function pointer and that is to store address of matching methods to save the time, and to achieve the security. It reduces the time, right? It reduces the time and save the memory and achieve the security. There are multiple purposes to use delegate, not only single purpose. Right? Multiple time use the method, yes, again and again multiple yes, method. Chunki this is a function pointer and this will always occupy less memory in your memory place, only less memory. Any other question? But single line method, single cast delegate, method, yes, sir. single cast delegate is capable to store address of single method only. So there is no any big advantage after doing single cast delegates, but we are seeing the big advantage of using multicast delegates. Reason, we are just using the same address to store multiple methods. This time I am calling 4 different methods, but you can call 4,000 different methods accordingly, and more than that also, as for your requirement. If your requirement is more than 4,000, again you can use more than 4,000. Whatever your requirement is there, only single delegate is capable to store different types of methods address. So that's why this technique is called multicast delegates. And why I am using plus equal to store the address of multiple methods on the same location. That's why. If you will not use the plus here, what will happen? What will happen here, Sajad? If I will not use the plus equal to, what will happen? What will be the result? What will be the result? I have already removed the plus operator here. What will happen? Not increment, sir. What will be the output? I am asking that what will be the output? Is there any error or any outputs it's going to display? This will perform only the task of division. Let's see why. This program is only perform the operation of div method, that is the last method. Let's think about that. Why? When the compiler comes to this line, what will happen? The address of add method will goes to d1. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Again, when compiler comes to this line, what will happen? The address of subtract method go to the d1.
and the address of add methods get replaced by the subtract. Yes or no? Because let's see the example. Yes, sir. I am using here x equal to 10, x equal to 20, right, and x equal to 30 and x equal to 40. When I will print x, what will the value of x? 10, 20, 30 or 40? Give the example. 40, sir. Yes, 40, of course sir. it is 40. Yes or no? So the last value will be printed only. Why? Because the Yes, next sir. value will replaced by the new value. Always the current value replaced by the new value. The first value of x is 10, the next value of x is 20, again the next value will be 30 and then the 40. So there is no any replacement after 40. So the value of x will be 40. Same here. The first time the address of add methods goes to div1, right? No any issue. When the address of subtract methods come to the div1, address of add methods get replaced by the subtract. Same, address of subtract methods gets replaced by the multiply, and the address of multiply, subtract and add all the methods get replaced by the divide. So the result of division will be printed on the board only. Let's see. Yes, I am giving two user input, that is 50 and 10, and only division will perform. Yes, division of two number, that is 5, not addition, subtraction, multiplication. This is the reason, that's why I used plus symbol here. Clear now? Yes, sir. Any doubt? Sir, No, sir. suppose that, sir, one method is a signature is change, but all the method signature is same. So what will happen, sir? Suppose that one method, first method is a signature change, but all the method signature is a same. So what will shall happen? What will result give me, sir? Once again, just repeat. First method is different, signature is change, one is third signature, but all the method two signature. What will happen, sir? Only this has having same signatures with the delegates. Delegates should only capable to store the only same signature methods only, and next of the methods that having the different signatures, that will be ignored by that delegates. We cannot store address. We cannot store address of that methods having different signatures. Let's see. I'm just creating one more method, that is modulus, and I am creating here three arguments, that is int a, int b and int c. And suppose that I am giving here body, that is modulus of something. Yeah, I am modulus methods, right? I'll just give some information here, and now try to store the address of modulus method. Let's see what happened. This will give you error. This line will give you totally error. Why this line will give you error? Because delegate does not act like this. Delegate won't work for the different signatures, because in the theory line we have already mentioned that only the address of matching methods will store inside the delegates. Yes or no? Yes, sir, I understand. Yes, we can see this highlighted line. Delegate is to store address of matching methods. Matching methods means signature of delegate that should be same with the signature of methods, right? Yes, sir. So in these examples I am trying to give some methods address whose number of arguments is totally different from the delegates. Yes or no? So this time this delegate is not capable to store the address of modulus methods, but we can create another delegates. We can create multiple delegates inside the programs if you want to store different types of methods signatures. If you want to create single or separate delegates for storing this address of modulus methods, we can create, no any issue. But let's remember this line, only the delegates of matching methods can be stored inside the delegate. So delegate is a function pointer that is used to store address of matching methods only in the last point. Got it? Any problem? Sir, overloading store different signature, but modulus store similar data type.
No. This is not capable to store only single data type. You can also create float type of argument here, a string type of argument here. But make sure that if you are सिमिलर creating बोल रहा हूँ सर मैं, सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करेगा सर ये, कौन मतलब इंटीजर लेगा तो सर दो, ए में इंटीजर है तो बी में इंटीजर ही लेगा सर इसमें. yes, number of arguments data type that should be Yes, same signatures, but in a method overloading there should be different signatures. What is the definition of method overloading? Defining multiple methods having same name with different signatures. But what is the example and what is the definition of delegates? It is to store address of matching methods, means signature of that method that should be matched with the delegate. Yes या no? ये कहानी. Yes, sir. अब क्लियर हो गया डेलीगेट? Yes, sir. और कुछ? आज डेलीगेट ही रहने दे बस. जी सर. इसके बाद फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग छोटा छोटा प्रोग्राम है, बस 5-6 दिन का क्लास है, तुम्हारा सी Sir. फिनिश हो जाएगा. What I am use the single class, use the multiple delegates, sir. In a single class, Same class. yes, we can. I just speak about that. We can create multiple delegates for different methods, for different signatures. I have given you example. Suppose that you want to store the address of this modulus method. We can create different delegates having 3 arguments that will match with this modulus method. Yet or no? Yes, of course. Yes, sir. Yes, sir. I understood, sir. Let's create delegate void model1, and this will having int a, int b, and int c. So this model1 will be capable to store address of modulus. Model1 dd1 is equal to model1, and let's pass the address of modulus. And here we can pass 3 different argument. Yes, it can be happen. So within inside same class we can create multiple delegates. There is no any issue. Now this is clear. Yes, sir. When you execute Yes, this, sir, what will happen? understood, sir. IM modulus method that will be called. Yes, sir. Yes, IM modulus methods in the top of the line. Got it? So I have also given examples. If you want to define multiple delegates, you can. So this is not required here. I'm just deleting from it there. So now this is the fresh example of multicast delegates. So if interviewer asks you what is delegate? So delegate is a function pointer. What is the use of delegate? It is used to store address of matching methods. How many types of delegates are there in C#? So there are 2 types of delegates, single cast and multicast delegate. So what is the use of single cast delegate? Single cast delegate is used to store address of single methods, whereas multicast delegate is used to store address of multiple methods. ठीक है, चलिए. Yes, sir. बस के इतना ही रहने देते हैं. बहुत है इतना. Yes, sir. मजा आ रहा है? Yes, sir. मजा लेना Yes, भी sir. चाहिए ना. चलिए मैं पीडीएफ बना करके भेजता हूँ, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं. थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पढ़िए, आप लोग खूब पढ़िए ना. मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँ लेकिन आप लोग खूब पढ़िए. आप लोग पढ़ने में कंजूसी नहीं करिए, आप लोग को बहुत जरूरत है. हाँ बोलिए. In advance, sir, Happy New Year, sir.